Let me share my screen now. Share. So is my screen visible? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? VS कोड दिख रहा है? Yes, visible. Okay, good. So let's begin. So also I got a good reference for you all. So I will be teaching you from that only because I found that it covers most of the operations very easily and effectively. Okay. So just focused. Where is my VS code? Okay. See now. Last time we have seen lot many operations, that what is series, what is data frame. Then the very important thing, that series is like a column, a data frame is like a whole table. Then we have seen how we can create a data frame. After that, we have seen a very important thing, that is LOC. What is LOC, how it works. Then we have deal with the CSV. So call it .csv. We perform different operation in that CSV. We came to know .toString. We explore this .toString, exactly what it is and what is the difference between .toString and normal printing. Okay. Then we move further. Then we have seen head, tail. Then default, by default it gives 5. Then we came to know if you want more data. Then we came to know 10 and this all things, other things. Okay. Then moving further, we came to know about info, how we can get the different info. So we were able to get that info as well. Then we saw the difference between object and the string. After that, we also seen how we can convert object into a string and what is the major difference between object and the string. Okay. So moving further, now today we will be going to see. Let me scroll down. Yeah. So see, today we have JSON as well as database, as well as what we have CSV, Excel. Okay, Excel is also there, no? Okay, let it be. So see, I have JSON, I have CSV, normal, simple thing in that. Database also we have. We will see how we can load this database and see what the content is present in this database. Okay, so let's begin. So first thing we will be going to see today is that how we can read a JSON. Okay, how we are able to read a JSON. So we have seen that. Let me write again for you. Import pandas as PD. Okay, I need to select my environment. So it will be connecting to the kernel. After that, it will be going to proceed. Okay, done. See, import pandas as PD. Then we have created df is equal to PD dot read CSV. So I have a simple CSV in front of you, that is purchase.csv. Let's see what content in is present in that print df. You can see simple data is present in front of you in the purchase.csv. This type it looks like this, and we have now just we seen that after reading it in pandas we get this type of details. I hope up to this point of time this thing is clear to all. Yes or no? How we can read CSV and this whole thing. Is it clear? Simple? Yes. Okay, Yes. good. So say, let me show you one more thing here, differences like this. A simple thing is written in front of you that we are printing just a CSV in a simple manner.
But can be there any other way? Means can it be represented in a more what we can say attractive or in a different way? I mean, you can see the unnamed zero. Why this thing is coming? This question should be arise in your mind as well. What is the reason? So just see same thing. Sorry, Control C. I will be just providing here index. As last time also I taught you the index. Okay. So instead of this, I will write index call. Means I will be assigning a column to it particularly. So what we'll be having, those CS we don't have indexes like our data frame. So all we need to just designate the index call when reading. What it means, see. So if I print it now, you can see what the result I got. Clear? So what does it is doing? It is doing that. Let me provide a line for you. Just I copied. I will paste you it for here. Okay, sorry. So CSV don't have indexes like our data frame. So all we need to is just designate the index call when reading. Okay, so we can provide an index call. So you can see the difference from the above itself. Is it clear to all? So what we are setting the index to be column 0. We are setting to the index to the column 0. You will find that you will what? You will find that the most CSV won't ever have an index column. Means most of the CSV don't have an index column. So in that case, we usually don't do this type of thing. But if you want, so we can go in this way and set a particular column to the index. Clear to all? Yes or no? Is this point clear? Yes. Good, Yes. good. So let's move ahead. And if I write here 1, what will be the result? Can anyone let me know? See the result. Okay. You can, whatever index you want, you can set that index by selecting that particular column. Okay. This is another thing. So now we will be seeing reading data from what your JSON. See now how we can read the data from a JSON. So as we have a purchases.json. So same thing what we are doing here, same thing we need to do here as well. For example, df is equal to pd.read pd.read JSON, and I will be passing my JSON file path in it. See, now let me present df in front of you. See, this is a JSON, and JSON is in the dictionary form, as you know, everyone. JSON is in which form? Dict, Python dict. So you can see how pandas can read it easily. Where is my code? So here's my code. Just read the JSON provided to you. And one thing to note here is that a very important thing that you should note. If you see the difference here when we were just printing the CSV and here when we are printing the JSON, you notice this time our index came with us correctly. Hope you all noticed this thing that we got the index correctly. Okay, so using JSON allow that index to work through nesting. Means whenever you are using JSON format, and mainly when you are going to deal with the development part, means if you are working with multi applications, so whenever you are sending request, getting request, post get, when you are dealing such type of things, I hope you heard about the API, application programming interfaces. So in that case, we are sending the APIs or we're getting the APIs in the form of a JSON mainly. So it contains all the information in the form of JSON, which can be retrieved easily. That's the reason you can see whenever in pandas as well, you can see the JSON structure.
is automatically nested properly. If there is a very simple error in the JSON, like there is something mismatch, so it can be easily identified. Okay, a very important for JSON. I think there should be one separate session because it's a very important thing. Okay, I hope this point is clear to all. Can I move further? Yes or no? Yes. Good. So see now, also we have now reading data. Just I am providing you a simple example that you can what the things you can do with different database. Now we have a SQL database as well. So whenever remember that if you are working with database from a SQL database, you need to first establish a connection. What you need to do? You need to establish first the connection using an appropriate Python library. What does it mean? There are multiple Python libraries to deal with the databases. Okay, so whenever you are dealing with a particular library, then you need to pass a query. What we need to pass? We need to pass a query. Pass a query to who? To whom? Sorry, spelling. We need to pass a query to pandas. So for now, this time means I don't know who have which MySQL or whatever your PostgreSQL. So simple thing we can go with that is your SQLite. So everyone just install this SQLite. Okay. So there is a command to install it. So what you can do, you can write pip install SQLite. Okay. What pip install SQLite 3? If you want to write 3, you can write. It will be going to install a SQLite. So it's a SQLite 3 is used to create a what connection to a database, which can be, you can say, what can I say in the simple words for you that basically we will be using different operation. So okay, I got something error, no worries. What about in your case? Is it got executed successfully? Okay, yes or no? Finished with status error. Status error. What about others? Same. Same. Okay, and just type import SQLite 3 now. Do you do your cell got executed? Check this. Yes, it executed. What about others? Executed. Very good. So see now here we need to set up a connection. For that I will be initializing a connection variable con, and with the help of SQLite 3 what I will be going to do, I can write in this way also import SQLite as SQ. If you want you can do in this way also. Okay, so I will be doing SQ dot connect SQ dot connect. What thing we need to connect here, that is our database dot db. So this is the way means we can connect a database. Now just execute. Okay, there is an error. Acha, I need to execute this cell, then this cell. Okay, I forgot to execute after writing a alias. Okay, please let me know, do your cell got executed or not? Yes. Good. What about others? Done. Very good. Done. So one thing to note here is that if you have data in your PostgreSQL, MySQL, or some other SQL server, so you will need to what you need to obtain, you need to obtain a Python library. So there are different Python libraries. Suppose PyMySQL. Okay, then for Postgre there is, I think, let me check what is the name. So there are different libraries available for different SQL servers. Okay, so for Postgre, let me check what is the Postgre Python library. You can also check and let me know.
what thing we import in Postgre? Yes, anyone? Just search on Google. Check. Okay, no need to worry. So we write for post. Psycho PG2. Yeah, very good. That's the thing. Okay. So this is your PostgreSQL. We write in this fashion. Okay, is it correct? Is it correct? So you need to install that particular library for it. Okay, clear? Yes. Yeah. So it depends on the database, which database you are using. Now see, in what way I will be going to execute a command here. So for executing command and to check the database, what the database just contain, you need to have some knowledge of SQL. Means how we run basic command. So see, df is equal to pd dot read. See how I write it, read SQL. Sorry, read SQL query. See in front of you. So what I will be writing here, I will be just writing here a very simple line that you have learned in your database subject, that we have a table name called as the purchases. Okay, so see how I'm writing. Select, sorry, select star. Star means from all, na? Select star from purchases, na? So we have purchases, and you need to pass here your connection, that is con. Okay, I think it should be passed outside. Outside means here. So let us check. Yeah, it got executed. Now if I print df check, so this is the thing present in my database. Simple SQL query in front of you, and select star from purchases, and I got the result in front of you. Everyone, is it clear to all? Yes. What about others? Is it simple? Is it simple? Yes or no? Can you repeat it once again? Okay, no worries. So see, first we have connected what database to a particular SQLite. As we are using SQLite, so we need a connection. As mentioned, whatever database, whatever SQL server you are using, so in that fashion you need to connect to that particular SQL. Suppose we are using SQLite here, so we are connecting with SQLite, and we have database.db in which we have a database. Okay, so we move further, and we have seen that in this SQLite database, we have a table. We have a table which is called as purchases. Okay, so how can we read that particular table? So there is a simple query by passing a select query and our call. Call means our connection. We can read from the purchases table. So that's the thing we have done here. Okay, is it clear? Okay, okay, understood. Yes. Very good. And you can see if you want to set index here, like for example, I can write df is equal to df dot set index, and you can pass index. Okay, so see now your df index will be your June, Robert, what are the names provided, like here it was in this fashion. 0 1 2 3 will be removed by default index, and default index will be now the particular column. Okay, so in fact that is that we could use set index, or any data frame using any column at any time. It means that indexing series and data frame is a very common task, as you came to know from all the particular database provided to you, and there are different ways of doing it. Okay, clear to all? Yes. Good.
So let's move further. So as you can see, our DF look something like this. Okay. So there is one more thing that you can do, df dot to CSV. If I want to convert this my particular DF which is in the database, so if I want to convert it into the CSV, am I able to convert into the CSV as presently it is in a database, that is purchase.db. You can see here where is purchase. Sorry, database.db. It is in a database.db. Okay, so I want this to be converted into CSV. So I will be naming a CSV as new purchase dot CSV. So see, hope we will be getting something. Okay, so cell got executed, and you can say new purchase dot CSV is created. You can see here. And in the same way, if you want to convert particular to the JSON, yes, you can do the same thing. This thing, same thing you can do here as well, and you can write here to JSON, and here the format will be .json and execute. See, JSON is present here, new purchase.json. See how simple it is. Okay, and you can also do one more thing, that is where is the IPNB? Huh. Suppose I can do PD, sorry, df is equal to read CSV, sorry, PD dot read CSV. Okay, in that I will be reading new purchase.csv. So you can see how my df looks, but I want to convert my this df to to SQL. Am I able to convert this in SQL? Yes, I am able to convert in SQL. So I will be writing is new purchase will be my database, and I will be passing here con. What is your con? Again repeating the con. Con means connect. The connection is important. The connection is important. This thing is important. So it will be connecting to your database. Okay, database.db. Now let's check. Okay, 4. So you can see I'm getting the result. I am getting the result. Means it is stored into the my database.db. The particular thing is stored in my database.db. So for example, if I am doing the same thing again, you can see the result. Okay, clear to all. You can convert it into Excel as well, whatever thing you want. So df dot to Excel new purchase dot Excel extension Excel same, is it correct? Correct. So you can say Excel is also created. So I hope everything is clear to all now. Yes or no? Yes. Simple, easy, Yes, Bhaiya, clear. good. So let's move further. Now we have the data set with us, that is what? IMDb, correct? So see, so we have a database name as IMDb movie data set, and in that we have set index column as a title. So if I provide you the movies, you can see the title will be my index. Okay, everyone just do this step, complete this step and let me know. Just read the CSV and set the index call as a title. After doing this, just let me know.
Done? So meanwhile also perform this type of operation that we have covered in the last session. Simple, simple. Or you can pass here whatever number you want to pass. So head will provide top, tail will provide from last. Okay? आ गए सब साथ में? क्या किधर अटक गई गाड़ी किसकी? Yeah, Done. done. Good. If you want to see the code, how to read and how to provide title, just see it. Can I move further? Need confirmation from all. Okay, Yes. good. Others? Yes, done. Chalo. So see, whenever you have read your data set, the first thing you need to remember that, again I am repeating this thing that we need to get an info about the data. It means that info should be one of the very first command you should run after loading your data. So I hope this thing is clear to everyone and same thing we have done last time as well. So we get the clear cut idea about our data. Means exactly how many particular rows are there, columns are there, then about the entries and data type of it. So we get a generic view. Okay. So it provides essential data about your data set, such as you can see the number of rows and columns. Then after that, what type of data is in each column and how much memory your data frame is using. You can see how much memory your data frame is using. Okay. And you can one thing you can notice that in our what movie data set, we have a column named as the revenue and a meta score. Okay. So there will be some missing values. So we'll be dealing how we can deal with the missing values. Okay. And there is another more one thing that is movies dot df dot shape. So what this shape does? So the shape will be providing you the tuple which will be containing rows and columns. So let me execute and see. So your rows are 1000 and your columns are 11. Okay. So though you can see one thing that dot shape don't have a parenthesis. It is attribute. Again repeating, it is attribute. It's not a method. Okay. It is a simple tuple output you will be getting. Do you got the output? Yes or no? Yes. So also one more thing to remember and to note is that this thing that dot shape you will be executing lot many times. The reason is whenever you are cleaning and transforming your data, for example, you might filter some rows based on some criteria and then you want to quickly see how many rows are removed. So for that case, you will be going to check it using the dot shape. Is it clear why this dot shape is very, very important to all of us? Yes or no? Can you repeat once again? Okay, see now. So the reason of dot shape is that it is providing you the rows and columns. Okay, so we have 1000 rows, 11 columns, but the reason of dot shape is that this particular command or this particular code or this particular attribute you will be using lot many times. The reason behind is that if if you are dealing
or if you're cleaning the data, you are transforming your data. So in that case, you need to check again and again that your rows are getting affected. Yes or no means your column is getting affected. So you'll be checking through it dot shape dot shape. So you'll be getting some updation in the rows and columns. Is it now clear? Yes, clear. Yeah. So moving to the next thing, that is handling duplicates. So remember, the dataset does not have duplicate rows, but it is always important to verify. What the thing I just mentioned, the dataset does not have duplicate rows, but it is always important to verify. Okay, so see now how we can do this thing. For example, I can do in this fashion. I will be creating a temporary data frame. In that, will be having my movies.df and I will be going to append. Append means I will be adding the movies.df to the temp.df. Means I will be doubling it. For example, let me print in front of you. So you will be getting idea of df.shape as well. So if I check my df.shape now, it will be 2000 rows and 11 columns. Sorry, something got wrong. What the thing is wrong? Data frame object has not been append. Okay, let me check it properly. Previous there was an attribute like append, but this time it's not showing. Let me get a confirmation about the append. Okay, so the reason I was doing append to show that how we can have a duplicate. So see, I got the reason that the error arises because the append method for pandas data from of deprecated. Okay, a very important thing you need to be note that whenever you are learning these things, many times the versions are getting deprecated. You can see. Okay, the error I was getting, this is the reason behind it. So it is telling to me to use concat instead of append. So this is called the way to learn. Okay, concat it is also not taking. So what can be the reason behind it? So yes, whenever you are using concat, there is another way. Means you need to write two times into the particular inbuilt function to see how. So I will be keeping this error as it is because many times you will be also getting the same error. See now. Okay. I hope it is clear to all. And please note this error because this type of error you will be getting lot many times because many times the versions is getting deprecated. Okay. Please run this code and check are you able to get 2000 rows and 11 columns. Yes. Still doing. Okay, okay. No worries. Yes, got it. Good. What about others? Got it. Yes, done. Yes, sir. Very good. So see what just I have done. I was using append, but append was depreciated, so I went with concat. And you can see the syntax for concat is that you need to pass movies df data frame two times, so it will be going to concatenate it. Okay. So now we have checked that the shape are and we are getting this thing.
So we have now duplicates in our data set because we have pasted the same database, means we have concatenated the same data set to the particular data set, that is a temp.df. We have stored it in a temp.df. Now the reason behind is that I will be teaching you, if in a database there are duplicates, so we need to drop that duplicate. So we will be using drop duplicates, and we need to do in place is equal to true. Now what is this in place is equal to true? In place is equal to true will modify data frame object in place. It means that if you're not passing this in place is equal to true and you are just running, so for this cell only it will be working. But when you again run the temp df, then it will be moving to the same thing. Okay, that's the reason we are doing in place is equal to true. So it will be by default considering to the all the temp df, that the result will be same for all. So see, when I executed this cell that drop duplicates, now let's check what the result I will be getting. Okay, so let's check tempdf dot shape. Sorry, see the mistake I have made in front of you. Now you can see again the duplicates are removed and 1011 I am getting. Okay, and so you can see now of tempdf will have the transform data automatically. And another important argument for drop duplicate is to keep, which has three possible functions. So we have three possible functions that by default we can drop the duplicate, or we can drop last, or if you want to, if you do in place is equal to false, then you see the result. It will be doing for that particular cell only. For other cell, if you again print df, it will be not working. So you need to initialize a new variable for it in that case. Clear to all? Any doubt? Yes. Can I move further? Now let's see column cleanup. So we know how we can check the column, that is movie df dot columns. So these are those columns which are present in our data set. Okay. So how we can now deal with the column cleanup? Now let's see. Okay. Column cleanup means there are different options for the columns. If you want to change the name of a columns, how we can change the name of particular columns, these things we will be going to see. See now. There is a dot rename means, see here, I will be providing movies df dot rename. If I want to rename particular column, can I able to rename from here? Yes, you can able to rename from here. Just you need to pass a column's name and to which new name you need to rename. Suppose I want to rename this. What is this? Runtime minutes. Runtime minutes to runtime. To what? Runtime. See how we can rename it. And I want to also rename this revenue. Revenue to just revenue. Okay, revenue. And if you want to do it permanent change, then you need to write in place is equal to true. Remember, fit this thing in your mind. Okay, always. If in place is equal to true need to be done. Okay. Now I hope my code is correct. Let's check. Yeah, the cell got executed. If I check now movies.df.columns, now check.
Do my column renamed? Yes or no? Check. Yes. My column got renamed or not? Yes. Yeah. Just go through code and execute it. After completing, please let me know. Everyone done? Yes. Any doubt? Simple? Chalo. Can you show the code once? Done that. Good. See now, you can see in most of the cases this is a simple operation. I'm again one is I'm doing in front of you, like movie div dot columns. If you want all columns in a particular, what we can say, in a lower or upper, you can do that thing as well. Okay, in this way you can write for, and you are going to traverse by using the list comprehension. Means you will be traversing to each particular column in your movies df movies df. Okay, and when you will be going to see your movies gf dot columns, so you can see all will be in the lowercase. Okay, simple operation. Just execute this cell. We have used just list compression. List compression means writing this particular thing here, and what the operation you need to provide, you will be providing it before it. Once done, just let me know. There is a doubt. Hmm. Uh, if we don't use in place equals to true, Hmm. then also the output is coming same. Same in the same means how? Like we have changed runtime and revenue. Hmm. Same it is coming. So okay, let me explain you thing again. Suppose, okay, here we have in place is equal to true. Let me remove in place is equal to 2, and we have rename movies df dot rename. Okay, so let me check. First I need to okay, by default you can see I have just converted it to a smaller, so it is considering this as a smaller. Okay, so see, one thing I can explain you properly. So this is that I can provide you the example of in place is equal to true. Okay, in place is equal to true.
A very simple example, you'll be getting idea. So I will be taking example of data frame and will be explaining you in test. So check, you see now I have a data set, means I have created a data frame. So in that particular data frame, so this is a data frame in front of you. Okay, you can see a sample data frame. If I execute, I got this particular result in front of you for the particular data frame. Okay, so here what I will be doing, I will be dropping a column with in place is equal to true. With in place is equal to true, I will be dropping a column. So for example, I will be dropping a city column. Okay, drop the city column and it will be using the in place there, and you can see the city column is dropped. So let me run this again. Here will be city, and let me remove this in place and let me run it. Drop df dot drop column is equal to city. Let's remove this and run it. So you can see whose question was this? Mine, Kushi. हाँ खुशी. So see खुशी, तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा बनाया, डेटा फ्रेम सिंपल एग्जांपल, और ये प्रिंट डीएफ किया अपन ने यहाँ. तो जो डेटा फ्रेम में अपने को दिख रहा है, तो उसके बाद अपन ने क्या किया, एक ड्रॉप किया कॉलम सिटी को. तो यू कैन सी द कॉलम सिटी, तो ये ड्रॉप हो गया. तो इसके बाद जब मैं डीएफ प्रिंट करूंगा, तो व्हेन आई प्रिंट डीएफ, तो उसके अंदर सिटी कॉलम नहीं होना चाहिए, बट यू सी दैट देयर विल बी द सिटी कॉलम. सिटी कॉलम दिख रहा है इसमें, वो दिखना नहीं चाहिए. तो उसका एक कारण है, तो हम यहाँ पे करते हैं उसको in place is equal to true. जब ये करते हैं ना in place is equal to true, और जब df रन करूंगा तो देखना सिटी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, सब जगह अप्लाई करेगा. और खुशी, आई थिंक यू मे बी डूइंग दिस थिंग, यू मे बी डूइंग दिस थिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग अ वेरिएबल डिक्लेरेशन हियर लाइक df इज इक्वल टू 1. तो वो क्या होता है, वो df 1 में स्टोर हो जाएगा. ओके, देयर इज एन एरर. व्हाट इज दिस एरर? अच्छा, सिटी फाउंडर्स नहीं होगा क्योंकि मैंने इन पे टू किया था. तो मैं पहला सेल रन करूंगा फिर से, और ये फिर से रन करूंगा दूसरा वाला. तो अब देखना, अब मैं जब df प्रिंट करूंगा ना, तो आई विल बी गेटिंग अ सिटी, बट व्हेन आई विल बी गोइंग टू प्रिंट df 1, तो मुझे नहीं मिलेगा. ओके, अब इससे आई थिंक इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ होगा. यस और नो? Yes. So in place, true will affect the original data, right? ओरिजिनल डेटा, या मतलब जब तुम इनप्लेस टू करोगे, मतलब क्या होता है एक्चुअली, अभी ये df1 तो मैंने नया वेरिएबल बना के उसके अंदर मैंने चेंजेस स्टोर किए, मगर मुझे चेंजेस करना है डायरेक्ट टू द मेन डेटा, मतलब जो मेरा मेन है ना ओरिजिनल डेटा उस पे. तो मैं करूँगा वहाँ पे इनप्लेस इज इक्वल टू ट्रू. और ये पैरामीटर पूछा भी जाता है कि इनप्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे जो मेन डेटा है उस पर कुछ चेंज करना है. तो अब देखो ये मेरा मेन डेटा है, ठीक है, मैंने उसको फिर से रन किया ऊपर, और नीचे मैंने इनप्लेस ट्रू किया है. फिर से देखो, एक बार अच्छे से देखो, इनप्लेस ट्रू किया है. चलो मैं एक बार निकाल ही देता हूँ इनप्लेस टू फिर से. अब मैंने इनप्लेस टू निकाल दिया यहाँ से. अब मैंने df डॉट ड्रॉप किया है. तो ये देखना, जब सेल एग्जीक्यूट हुआ तो उसमें सिटी नहीं है, मगर मेरा जो ओरिजिनल df है ना, उसमें मैं देखूंगा ना, तो मुझे दिखेगा सिटी है उधर. मतलब उसने सिर्फ यहाँ पे टेम्पररी चेंज किया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ परमानेंट चेंज. तो मैं इनप्लेस टू करूंगा, और जब इनप्लेस टू करके यहाँ पे df रन करूंगा, तो आई विल बी गेटिंग नेम और एज. आई थिंक अभी सबको क्लियर हुआ होगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया जाता है. Yes. Yes, it's clear. सिंपल. Yes. तो ऐसा Yes. एक एग्जांपल मैं डेटा सेट पे भी करके बताया होता, मगर डेटा सेट में अपन ने बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं अभी तक, इसीलिए. ठीक है, सो सेम यू कैन अप्लाई फॉर द डेटा सेट एज वेल, अपना जो करंट डेटा सेट है मूवीज वाला.
अभी मूवीज डेटा सेट में कॉलम्स का हाल क्या है मुझे देखना पड़ेगा पहले। तो सब स्मॉलर इसमें है अभी। ठीक है, चलो बैक टू द पॉइंट। अभी हम देखेंगे हाउ टू वर्क विथ मिसिंग वैल्यूज। ये भी हमने किया है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, हाउ टू वर्क विथ मिसिंग वैल्यूज। तो उस दिन बताया था मैंने कि मिसिंग वैल्यू चेक करना है तो क्या करना पड़ता है, एनीवन? is null. इज नल। तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ये सब आ जाता है। ठीक है। Sum. हाँ, तो मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा, सम। और जब मैं सम करूँगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा रेवेन्यू और मेटा स्कोर के अंदर मिसिंग वैल्यू है, बाकी इसमें नहीं है। ओके, तो ये अपने को समझ में आता है इससे, सम करने से। तो अब मुझे निकालना है मिसिंग वैल्यूज। तो मेरा टारगेट है कि मुझे मिसिंग वैल्यूज निकालना है। So see how I will be removing the null values, missing values or null values. So what we can see is that in our data we have 128 missing values for revenue, okay, और जो 64 है वो है मेटा स्कोर के लिए। तो डेटा साइंस और एनालिसिस जब हम करते हैं, सो अब इसको ड्रॉप कैसा करना है, क्या आप इंपोर्ट कर सकते हो, मीन्स इंपोर्टिंग मीन्स अगर नल वैल्यूज को किससे रिप्लेस करना है, व्हाट थिंग्स वी कैन डू। सो आफ्टर द डिसीजन ये सब कर सकते हैं, मतलब जब तुम ईडीए फीचर इंजीनियरिंग करते हो तब यू नीड टू डिसाइड, बट वी आर जस्ट लर्निंग, मीन्स वी आर चेकिंग हाउ वी कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग्स। So there is a very simple, very pretty simple thing what you can do. See, movies df drop, ये भी उस दिन बताया था। ड्रॉप क्या, एन ए। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे सब जितना भी था उसमें से उसने सब कुछ ड्रॉप कर दिया होगा। तो ड्रॉप करने के बाद व्हाट विल बी द रिजल्ट, सी नाउ। व्हेन आई एग्जीक्यूटेड दिस सेल्स तो तुम देख सकते हो कि अभी उधर 830 थे, 838 रोज है और 11 कॉलम्स है। पहले रोज थे कितने, 1000। ओके, तो दी ऑपरेशन ने क्या किया, द ऑपरेशन विल डिलीट एनी रो विथ एट लीस्ट सिंगल नल वैल्यू। जो तुम्हारा ड्रॉप एन है वो क्या करता है कि वो कौन सी भी रो में जिनका एक भी नल वैल्यू है तो उसको डायरेक्ट रिमूव कर देता है, मतलब ड्रॉप कर देता है। ओके, अभी जब मैं इधर मूवीज डीएफ करूंगा ना, मूवीज डीएफ डॉट शेप, अब इधर आपको एक आपस से एक एग्जांपल और एक चीज सीखने मिलेगा। क्या मिला मुझे, 1011, मगर मुझे चाहिए था ये क्यों नहीं मिला, 838 और 11। कैन एनीवन लेट मी नो, अभी ये कंसेप्ट मैंने In सिखाया है। place हाँ, in place टू डालना Hmm. पड़ेगा। वेरी 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 गुड। ठीक है, तो इधर क्या डालना पड़ेगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इधर डालना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अभी इतना अच्छे से समझ गया, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, बहुत अच्छी बात। अभी मैं रन करूंगा तो मुझे मिलेगा 838 11। समझा, क्लियर? Yes, absolutely. Yes. वेरी गुड। अब तो एकदम मुझे तो लग रहा है एकदम सिंपल है, अभी एकदम स्मूथ हो गएगा, सबको समझ के आ गया। और एक और चीज है कि जब अब अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं रोज। सो वी कैन ऑल्सो ड्रॉप कॉलम विथ नल वैल्यूज। अपन कॉलम भी ड्रॉप कर सकते हैं विद जिसमें नल वैल्यूज हो, और उसके अंदर अपने को एक्सिस सेट करना पड़ता है। सो वी कैन सेट दैट पर्टिकुलर एक्सिस एंड वी कैन डिलीट दैट पर्टिकुलर कॉलम्स। ओके, so for example, how can I explain you this in more better way? See now, uh, let me think how can I explain you in an easy way. तो देखो, what you can do is that, अभी इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू किया था ना, इसको फिर से रन करता हूँ मैं एक बार। चलो, तो रहने दो। इसको रन किया तो अभी क्या आएगा, अब तो 0 0 0 ही आएगा क्योंकि ड्रॉप कर दिया है अपन ने, है ना। तो मुझे फिर से एक बार डेटा सेट रीड करने दो, क्योंकि 0 0 मतलब मैंने इन प्लेस टू किया तो सब कुछ उसने डिफॉल्ट 0 कर दिया। लेट मी रीड माई डेटा सेट अगेन। ये ऐसा होता है भाई, डेटा सेट। तो ये डेटा सेट एक बार फिर से रीड करूंगा आपके लिए मैं। ओके, अब मैं जब इधर मूवीज डीएफ डॉट शेप करूंगा, तो आई एम बैक विथ माई जो पहला डेटा सेट था वो। अब मैं बताऊंगा, तो मूवीज डॉट डीएफ इज नल।
रीजनल की स्पेलिंग गलत है। रीजन, अरे रीजनल डॉट सम। तो ये रहा अपने सामने डेटा सेट। तो मुझे अभी करना है डील विद एक्सिस से। कैसे मतलब डायरेक्ट एक्सिस, मतलब जिसके अंदर ये नल वैल्यूज मेरे को कॉलम में डिलीट कर देना है। तो सी हु इज योर डीएफ, आई विल बी डूइंग ड्रॉप एन ए, और मैं इधर पास करूंगा एक्सिस और उसको करूंगा 1। तो देखो रिजल्ट। अब इसके अंदर एक्सिस इक्वल टू 1 किया, तो मैं इधर भी यही कर दूंगा आपके लिए। व्हाट आई कैन डू, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, let me do in place is equal to true and see the result. In place is equal to true। अब मैं जब मूवीज df डॉट का शेप देखूंगा तो मुझे सिर्फ कितने कॉलम्स दिखना चाहिए, 9। देखा, 9 ही दिख रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? क्या किया मैंने अभी, सिंपल सिंग आपके सामने। क्लियर? Yes. ये तो हो गया रिमूव करना, मतलब डायरेक्ट डिलीट कर देना। नल वैल्यूज दिख रहा डिलीट कर देना। मगर इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज ये तुम्हारे डेटा सेट पे अफेक्ट कर रहा है। तुम डायरेक्ट कॉलम डिलीट कर दे रहे हो, पूरी रो डिलीट कर दे रहे हो। इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, सो गुड थिंग इज दैट यू नीड टू डू इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले और इसके बेसिस पे हम इम्प्यूटेशन कर सकते हैं। तो इम्प्यूटेशन क्या होता है वो देखो अभी। इम्प्यूटेशन इन द सेंस कि हम वो नल वैल्यू की जगह कुछ दूसरी वैल्यू इम्प्यूट कर सकते हैं, विच विल बी रिलेटेड टू इट। मतलब उसके ही रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ नया नहीं बाहर से ला के डालेंगे, उसके ही रिलेटेड कुछ तो भी डालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अब मुझे पता है मेरे पास रेवेन्यू के अंदर कुछ नल, अरे अरे क्या हो भैया आपका आवाज ब्रेक हो रहा था, वापस से रिपीट करो ना वो। गया इम्प्यूटेशन का क्या? हाँ, इम्प्यूटेशन। अच्छा अच्छा, आई विल बी रिपीटिंग। तो इम्प्यूटेशन क्यों करना पड़ता है हमें? तो सी उसका रीजन ये है कि द रीजन ऑफ डूइंग द इम्प्यूटेशन इज दैट अगर डेटा सेट में सब चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर नल वैल्यूज तुम डायरेक्ट रोज डिलीट कर दे रहे हो, कॉलम्स डिलीट कर दे रहे हो, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग। बिकॉज वो डाटा पे अफेक्ट कर सकता है। बिकॉज डिलीटिंग अ पर्टिकुलर कॉलम, डेटा सेट में से और वो कॉलम में कुछ इंपॉर्टेंट हो, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो हम डिफरेंट डिफरेंट इम्प्यूटेशन कर सकते हैं, और वो इम्प्यूटेशन क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे। मीन्स हम उसमें से कुछ मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, या डिफरेंट कोई पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूज केस आया है तो उसने बताया है भाई जिधर भी नल हो तो उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दो, ऐसा। ठीक है, लो सी। अब ये मेरा मूवीज डीएफ का कॉलम है। तो मैंने एक सेल एग्जीक्यूट किया था तो मुझे एरर आ गया था। तो ठीक है, वो एरर क्यों आया था, इधर रेवेन्यू मिलियंस पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूट। तो सी, मैंने एक रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू मिलियंस को बनाया, मतलब रेवेन्यू के अंदर अभी मेरा रेवेन्यू मिलियंस का कॉलम दिखता है। तो जब मैं हेड करूंगा तो मुझे पहले 5 दिखेंगे। तो ये है रेवेन्यू पहले 5 मूवीज का। आपको भी दिख रहा होगा कि रेवेन्यू से 5 मूवीज का। तो आई हैव स्टोर्ड एक न्यू वेरिएबल, क्योंकि मुझे रेवेन्यू मिलियन से डील करना है। तो मैंने कहा चलो उसके अंदर स्टोर करके आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन बताता हूँ। तो अभी इसमें से मुझे बताना क्या है आपको, वो देखो। तो जो चीज बतानी है ना वो क्या है, इम्प्यूटेशन क्या रहता है। तो फॉर एग्जांपल यू कैन सी, जो इसके अंदर जो मुझे रेवेन्यू मिलियंस में जो नल वैल्यूज मिले थे वो थे अराउंड 128। ओके, so is there any possible way can I impute something in it? Yes, there is a way. There is a way. So the way is that what can I do? I will be creating a revenue mean। मैं क्या करूँगा, मीन निकालूंगा पूरे रेवेन्यू का, और जिधर 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 नल वैल्यूज है उधर मैं वो मीन से रिप्लेस करूंगा। तो सी हाउ, अभी मैंने मीन निकाला। जो ये तुम्हारा रेवेन्यू कॉलम है ना, उसके अंदर पूरा डेटा है, जिस आर द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द डेटा, पूरे डेटा का मैंने मीन निकाला और मुझे मीन मिला अराउंड 82.95। सो मैं क्या करूँगा अभी, इन माय रेवेन्यू, जो मेरा रेवेन्यू है उसके अंदर मैं करूँगा ड्रॉप नहीं, इस टाइम मैं करूँगा फिल। फिल क्या करूँगा मैं, फिल करूँगा मैं रेवेन्यू मीन, और उसको मैं करूँगा क्या, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू।
ओके। जब मैं ये चीज करूँगा रन, तो यू कैन सी दैट अ वेरी वेरी गुड थिंग। और वो जो गुड थिंग है वो ये है कि व्हेन आई विल बी रनिंग माय, क्या है तुम्हारा, मूवीज डीएफ इज नल डॉट सम, अरे क्या गलत हो गया, अच्छा, सी, तुम्हारा जो रेवेन्यू है वो जीरो हो गया, मतलब जो नल वैल्यू से रिप्लेस हो गया, किससे, सब रिप्लेस हो गया तुम्हारे मीन से। इसको कहते हैं मीन इम्प्यूटेशन। आया समझ में? यस और नो? Yes. हाँ, अभी मैं बताऊँ मुझे कोड कहाँ से नहीं लिखा है किसने, तो मैं आपको बताऊंगा, मतलब स्क्रीन पे इधर से एग्जीक्यूट करो, तुम्हारे यहाँ पे भी सब सिंपल है ना, क्या हार्ड है? इजी है भैया। अगर वहाँ पे फिल नल के जगह फिल ना के जगह पे रिप्लेस यूज किया तो? रिप्लेस, व्हाई वी नीड टू यूज रिप्लेस? रिप्लेस मीन्स यू आर चेंजिंग द वैल्यू, अपने को फिल करना है वहाँ पे जो नल वैल्यूज है ना। रिप्लेस कब यूज किया जाएगा? जब भी आपको बताया जा रहा है कि आपको ये, मतलब ऐसा कोई कोई यूज केसेस रहते हैं जिसके अंदर लिखा रहता है कि जहाँ पे नल रिया तो रिप्लेस बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो रिप्लेस भी लिखा रिया तो रिप्लेस कर सकते हैं, मगर रिप्लेस का भी आप ऑप्शन फॉर फी लेने, फी लेने के अंदर जो रिप्लेस वैल्यू है उसको पास कर देना और उसको रिप्लेस करके ट्रू कर देना, सिंपल, क्लियर? यस। बाकी को क्या है, बाकी को पता कुछ समझा क्या नहीं, क्या सर के ऊपर से गया सब? व्हाट अबाउट अदर्स? यस, समझा समझा। समझा ना? थोड़ा बोरिंग हो रहा है अभी। क्योंकि होएगा ही, क्योंकि सब थोड़ा मैथ वैथ इसके रिलेटेड कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, रिप्लेस ये वो सब। वेदांश, यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम ना? यस। यू नीड अ प्रैक्टिस। शीट के अंदर रेफरेंस वीडियो दिए है, उसको भी देखना। ये मैंने जो बताया पढ़ाया वो उसके वो तो ठीक है, मगर साथ में वो भी करना है क्योंकि कंसेप्ट विल बी गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन, ठीक है? जब एक चीज दो बार तीन बार पढ़ोगे तो फिट हो जाएगा। जब हम भी सीख रहे थे फर्स्ट टाइम, मैंने जब पहले पांडव सीखा था तो मैं तो पूरा डर ही गया था, मतलब क्या है, खतरनाक चीज हो रहा है, समझ में तो आ रहा नहीं था क्या किधर से क्या हो रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है। यूट्यूब पे चार पांच बार वीडियो देखा, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के, तब थोड़ा 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 समझा, तब समझा रहे ऐसा है ऐसा है, अच्छा अच्छा। फर्स्ट टाइम तो मैं तो पूरा हैंग ही हो गया था, ये क्या हो रहा है, आंसर्स कहाँ से आ रहे हैं। चलो, कैन वी मूव फर्दर? यस भैया। ये यस। सब सेशंस के रिकॉर्डेड वीडियोस जल्दी से हो सके तो अपलोड होंगे? जल्दी से, हाँ चालू है मेरा, अपलोड का ही वही इशू है, देखता हूँ मैं आज जाऊँ ना, आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके। अच्छा चलो, ये भी तो मैंने बताया था आपको लगता है लास्ट सेशन में, यस और नो? डिस्क्राइब के बारे में, डिस्क्राइब क्या करता है, बताया था? यस, 5 नंबर समरी। वेरी गुड। जो तुम्हारे न्यूमेरिकल डाटा प्रेजेंट है ना, जैसे इधर रैंक हो गया, ईयर हो गया, रन टाइम, रेटिंग, वोट, रेवेन्यू, मिलियन, मिलियंस में, मेटा स्कोर, तो उसका वो 5 नंबर समरी प्रोवाइड करता है। ओके, इससे तुम्हारा डेटा सेट, तुम्हारा जो भी प्रोवाइड है तो वो अंडरस्टैंड होता है, मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर वेरिएबल्स, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग योर वेरिएबल्स। सो मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप की थी ना मैंने, तो उसमें सब यही काम था, मतलब मैं एडीए ही करता था उस पर ज़्यादा करके, डेटा सेट आता था, मैं एडीए करता था, फिर वो डैशबोर्ड पे आके दिखता था। ओके, पांडास, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको ऐसा भी देखना है ना, डिस्क्राइब मीन्स, फॉर एग्जांपल
आपको डिस्क्राइब देखना है पर्टिकुलर कॉलम का, तो कॉलम, चलो एक काम करता हूँ मैं इसमें, इसका देखते हैं अपन क्या आता है, इसका क्या आता है डिस्क्राइब करने वाला। इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल टाइप, तो भी देखते हैं। तो यू कैन सी जब मैंने इसका डिस्क्राइब किया तो मुझे सिर्फ काउंट मिला, यूनिक मिला, टॉप मिला और फ्रीक्वेंसी मिला, क्योंकि ये हो गया कैटेगोरियल डेटा के ऊपर डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो तुम्हारा डिस्क्राइब है वो यूज हो सकता है कैटेगोरिकल वेरिएबल पे भी। तो उधर तुमको क्या मिलेगा, काउंट ऑफ रोज मिलेगा, यूनिक काउंट ऑफ कैटेगरी मिलेगी, और टॉप कैटेगरी कौन सी है उसमें, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी। समझा? मीन्स यू कैन ऑल्सो यूज डिस्क्राइब ऑन कैटेगोरिकल डेटा। ये नहीं बताया था लगता है मैंने उसे। और एक और ऑपरेशन है, वो है, देखो, अगर मैं यही जनरल लूँ और उसके अंदर मेरे को वैल्यू काउंट्स करने हैं, वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट्स किसके वैल्यू काउंट्स, मीन्स इफ आई वांट टू चेक की फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है, इन दैट वे आई कैन चेक। सी, मेरे इसके अंदर जो जो एक कॉलम है उसके अंदर एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन ये 50 टाइम्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, ड्रामा की 48 है, वो सब तुमको प्रोवाइड कर देगा। देगा, so you can use value counts to check. So same thing you can also apply to other column, other column लो कौन सा भी, suppose actors, actors नहीं, actors, so you can see actors कौन किसका अकाउंट कितना है। और ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, मगर बता देता हूँ मैं भी। अच्छा, एरर आ गया, क्या एरर आया, could not convert string to float, extended answer, सॉरी मैंने क्या लिखा है, मैं डियर, ओके नो वरीज। सो मैं आपको कोई जो CORR का यूज बताता हूँ। इट्स कॉल्ड एज द कोरिलेशन मेथड। सो वी कैन जनरेट द रिलेशनशिप बिटवीन ईच कंटिन्यूअस वेरिएबल। जो तुम्हारा कंटिन्यूअस वेरिएबल है, इट्स मेजरली डील्स विद न्यूमेरिकल वैल्यूज, ओके। तो उससे आपको पता चलता है रिलेशनशिप। सो अभी ये तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, क्या ये भी डिप्रिशिएटेड हो गया है, लेट मी चेक। ऐसा चेक करते रहना पड़ता है, ओके। तो व्हाट कैन आई प्रोवाइड एज अ इनपुट, वो हो सकता है मूवीज डीएफ, मूवीज डीएफ, मूवीज डीएफ डॉट। अब मैं इसको प्रोवाइड करके देखता हूँ व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मीन्स मुझे रिलेशनशिप देखना है, तो इन व्हाट वे आई कैन सी, ओके। तो उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जब कोई चीज हो रही नहीं है, so we need to provide and we need to check। तो ये देखो, अभी ये तो हो रहा नहीं था, तो अपन को क्या करना पड़ता है, वो बोलते हैं कि ओनली सिलेक्ट इंटीजर, मतलब जो न्यूमेरिक है उसको ही सिलेक्ट करो और उसका रिलेशनशिप देखो। तो ऐसा रिलेशनशिप दिखता है फिर। मीन्स जो तुम्हारे डी टाइप्स है जिसके अंदर इंट है, फ्लोट है, सिलेक्ट दोज ओनली एंड उस पर कोरिलेशन अप्लाई करो और उसका कोरिलेशन मैट्रिक्स प्रिंट करो। डन, यस। भैया व्हाट इज कोरिलेशन, एक बार रिपीट करो ना।
कोरिलेशन सिंपली मीन्स अपने को जो रिलेशनशिप दिखती है विद द सपोज अभी ये देखो मेरे पास क्या है इधर और रैंक है। रैंक और ईयर में रिलेशनशिप क्या है, रन टाइम और रेटिंग में रिलेशनशिप क्या है, वोट्स और बाकी रेटिंग के साथ रिलेशनशिप क्या है, मतलब उसका कैसे कोरिलेट कर रहे हो एक दूसरे से उसका रिलेशन। अभी ये केस में तो उसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर फॉर सम एग्जांपल्स वो अपने को पता है। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर है अभी तक माइनस माइनस दिख रहा है आपको देखो, तो जो पॉजिटिव नंबर इंडिकेट क्या करता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब वंस गो अप द अदर गोज अप, मतलब एक जब ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, और एक जब नीचे जा रहा है तो दूसरा भी नीचे जाएगा। बोलते हैं ना वाइस वर्सा, वन गोज अप द अदर गोज डाउन। वन इंडिकेट्स अ परफेक्ट कोरिलेशन, जिधर वन होगा। अभी देखो ये रैंक रैंक का रिलेशनशिप क्या है, वन। दोनों सेम ही है ना, तो उनका रिलेशनशिप वन है। इट्स कॉल्ड अ परफेक्ट रिलेशनशिप। और जिसका माइनस में मतलब वो नीचे जा रहा है, और जिसका ऊपर जा रहा है मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन। ये तुमको स्टैटिस्टिक्स में अच्छे से समझेगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ बताया आपको एक फंक्शनलिटी पांडास में CORR है, जो आपको रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स का। क्लियर? ओके। हाँ। तो सबका हो गया यहाँ तक, यस और नो? यस। ओके, तो विल बी मूविंग फर्दर। अभी देखो आगे क्या है अपने पास। अभी कुछ नहीं, अभी सिंपल सिंपल ही बचा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम देखेंगे हाउ वी कैन डील विथ, मेरे उस दिन मेरे ख्याल से क्या रह गया था, LOC और ILOC बताना है ना आपको। ये देखो LOC और ILOC। सो बाय रोज जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, whenever we perform operation by rows, so we have there your LOC, instead of LOC let me write dot LOC। so यह होता है तुम्हारा locates by name, और तुम्हारा डॉट ILOC इसको बोलते हैं हम locates by numerical index। अब तो ये देखो कैसा वर्क होता है, जब आगे आई लग गया तो इंडेक्स समझ लेना, ILOC लिखा गया तो ठीक है। तो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। below, so let us take example किसका लेने का। movies of dot column। okay, so at that day I think I taught you LOC, I think yes, LOC बताया था ना। यस। हम्म, तो जो LOC एंड ILOC कैन बी सिमिलर है दोनों, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। मतलब पाइथन में जो लिस्ट के स्लाइसिंग होते हैं वो इस टाइप के ऑपरेशन इधर भी परफॉर्म किया जाता है। तो मैं वो देख रहा हूँ उसके अंदर कुछ तो डेटा होगा। लेट मी चेक दैट डेटा। इसके अंदर जो टाइटल्स है ना, टाइटल आई एम फाइंडिंग वन टाइटल, सो लेट मी प्रिंट। मतलब मैं उस पे वो रो के ऊपर आपको बता सकता हूँ। मूवी डॉट हेड, चलो ये रहा आपके सामने टाइटल पिक्चर्स के नेम के। चलो लेट मी टेक दिस पिक्चर नेम, क्या है मुझे भी पता नहीं, किसने देखा है तो बोलना। प्रोमेथियोस, ठीक है। तो अभी जो प्रोमेथियोस पिक्चर का नाम अपन ने कॉपी किया, अब मैं बताऊंगा आपको। प्रोमेथियस लिखा था पिक्चर का नाम है ना, तो मैं उस पर करूँगा LOC, जो इंडेक्स पे करना पड़ता है। टाइटल पे मैं करूँगा और इधर मैं प्रोवाइड करूँगा पिक्चर का नेम। अबे यार, फिर से ये हो गया। अरे अरे अरे, इधर मैं प्रोवाइड करूँगा उसका नेम, और लेट मी प्रिंट फ्री। तो यू कैन सी उस दिन भी बताया था
वेनेवर यू आर डीलिंग, मतलब आपने यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड किया तो अभी यहाँ पे टाइटल था, मैंने टाइटल प्रोवाइड किया तो उसके अंदर भी जितने भी रोज कॉलम के डिटेल्स होंगे तो यू विल बी गेटिंग। तो अभी तक देखो रैंक, उसका जेंडर, उसका डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर, एक्टर, ईयर, सब कुछ मिल जाएगा। ये तो बताया था उस दिन एलओसी। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. अभी आई एलओसी देखो। आई एल ओ सी डील्स विथ न्यूमेरिकल इंडेक्स। न्यूमेरिकल इंडेक्स मतलब क्या बताया क्या? अभी इधर तो मैंने नाम प्रोवाइड किया। अभी जो आईएलओसी के अंदर अब क्या करना पड़ेगा बताया आपको। इन आईएलओसी यू नीड टू डू वन थिंग, दैट इज, इधर तो टाइटल प्रोवाइड किया मैंने। इन आईएलओसी आई विल बी प्रोवाइडिंग इंडेक्स। तो अब इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है 1। सो लेट मी प्रोवाइड इंडेक्स 1। अब मैं जब पी आर ओ एम प्रिंट करूंगा तो सेम थिंग यू विल बी गेटिंग। सिर्फ उधर मैंने टाइटल प्रोवाइड किया और इधर मैंने इंडेक्स प्रोवाइड किया। और आपको मैंने एलओसी और आईएलओसी का फिर यहाँ पे लिख के बताया, लोकेट बाय नेम और इधर लोकेट बाय न्यूमेरिकल इंडेक्स। अब इसमें कुछ हार्ड है? इज देयर एनीथिंग हार्ड इन इट? No. सिंपल? Yes. यस। तो चलो उसके अंदर ही एक सिंपल चीज बताता हूँ। अभी एक कोड है क्या मेरे पास? स्टोर देखने दो मुझे, रहना तो चाहिए। है। अभी इसके अंदर मूवीज के नेम दिख रहे हैं आपको, प्रोमेथियस, ये वो। तो अपन जैसे स्ट्रिंग लिस्ट में स्लाइसिंग करते हैं ना, तो सेम इधर भी कर सकते हैं। इन डेटा फ्रेम ऑल्सो वी कैन डू दिस थिंग। अब ये प्रोमेथियस मेरे पिक्चर का नाम है, तो मैं उधर से कर रहा हूँ ट्रैवल, मतलब उधर से जाके और मैं सिंग इतने ये रेंज में मैं कर रहा हूँ स्लाइसिंग। और जो स्लाइसिंग करूंगा और उसके अंदर मैं आईएलएस भी प्रोवाइड किया 1 to 4। और जब मैं मूवी सबसेट प्रिंट करूंगा तो लेट मी कट दिस थिंग एंड लेट मी प्रिंट फर्स्ट दिस थिंग। यू कैन सी मुझे प्रोमेथियस स्प्लिट सिंग मिल गया। और वही थिंग मैं आईओलिस से भी करूंगा तो मुझे वही रिजल्ट मिलेगा। See, देखा? एग्जीक्यूट दो सेल्स मीन्स आई एम शोइंग यू हाउ यू कैन परफॉर्म द स्लाइस। स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं? One important distinction between .loc and .iloc is that to select multiple rows is that .loc includes the movie scene. अभी तक देखो, अभी तक dot movie scene include है, okay, in the result. But when you're using iloc, we are getting rows 104, 1 to 4. It means that index 4 is not included. अब इसका कैसा बताओ आपको एग्जांपल? तो see where is the thing. LOC, ILOC. Just to execute the code, so I will be explaining you the concept. What is it? Execute the code fast. Done. Done or not. So I will be explaining you the ILOC का एक very important concept. Yes, हो गया? Yes. डन। तो देखो, अभी जब हम स्ट्रिंग में ये करते थे ना स्लाइसिंग स्ट्रिंग में, तो उधर आपने एक चीज नोटिस किया होगा। अभी देखो इधर मैंने 1 to 4 लिखा है, 1 2 3 होगा और 4 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जब मेरा df डॉट हेड किया था अपन ने, तो उसका मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 नहीं होगा। इट मीन्स दैट एक बार फिर से नीचे आपको प्रिंट करके बताता हूँ आईओलीसी का। मैंने इसको कॉपी किया, इधर नीचे लूंगा। पहले मैं मूवीज मूवीज df डॉट हेड करूंगा।
मूवीज df डॉट हेड। तो देखो आपके सामने 5 मूवीज है आई। अब मैं रेंज करूंगा 0 से 4 तक जाऊंगा, 0 से 4 तक किधर, मतलब उसमें क्या क्या रहेगा, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, प्रोमेथियस, स्प्लिट, सिंग, 0 1 2 3 और ये 4। 4 क्या है, सुसाइड स्क्वाड। तो अब मैं 0 से कहाँ तक जाऊंगा, ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 होगा। तो लेट मी गो फ्रॉम 0 to 4 एंड यू सी, जस्ट चेक द रिजल्ट। तो इसके अंदर आपको सुसाइड स्क्वाड है ना, जो पिक्चर का नाम, वो नहीं आएगा, बिकॉज इट विल बी गोइंग टू एक्सक्लूड। जो जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे कि ये जाएगा 4 तक, बट इट विल बी नॉट कंसिडरिंग इट। मतलब ये देखो, ये तुम्हारा हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4। इट विल बी नॉट कंसिडरिंग डॉट 4। अगर आपको वो 4 चाहिए तो आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा 5 तक, तो आपका सुसाइड स्क्वाड दिखेगा। सो दिस इज द थिंग विच इज डिफर इन ILOC और LOC में। समझा? यस और नो? यस। LOC में क्या होता है, LOC में नॉर्मल चीज होती है। LOC में आप डायरेक्ट ये प्रोवाइड कर दे रहे हो, पिक्चर्स के नेम, जो मतलब प्रोमेथियस से सिंक किया तो सिंक तक वो होएगा ही। अगर आपने सिंक के जगह आपने यहाँ पे जगह उसको सुसाइड स्क्वाड भी प्रोवाइड किया नाम, तो सुसाइड स्क्वाड तक भी जाए चले जाएगा LOC में। ठीक है, देखना, सुसाइड स्क्वाड तक भी प्रिंट हो जाएगा। अरे यार क्या हो गया, अच्छा मिलेगा, सुसाइड स्क्वाड तक भी हो गया। समझा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन LOC ILOC। ILOC फॉलोज योर पाइथन का लिस्ट का स्लाइसिंग जैसा। कैन आई मूव फर्दर? आगे चलो। यस। गुड। तो आगे है, ये भी उस दिन लिया था मेरे ख्याल से, कंडीशनल सिलेक्शंस। अगेन आई विल बी रिपीटिंग बिकॉज ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। कंडीशनल सिलेक्शन, कंडीशनल सिलेक्शन मीन्स आपको पता है कि कंडीशंस दिस वी नीड टू अप्लाइड। फॉर एग्जांपल व्हाट वी वांट टू फिल्टर, क्या फिल्टर करना है तुम्हें, ऐसा मतलब ऐसा। तो यू कैन यूज कंडीशनल स्टेटमेंट टू अप्लाई दोस फिल्टर्स। तो देखो एक कोड है आपके सामने, जिसके अंदर मुझे डायरेक्टर चाहिए रेडली स्कॉट, और ये मैंने फिल्टर लगाया है। और मैंने कंडीशन डॉट हेड क्यों किया, क्योंकि इन मल्टीपल मूवीज जो रेडली स्कॉट होगा वो डायरेक्टर हो सकता है। अच्छा एरर आया, क्या एरर है, डायरेक्टर, डायरेक्टर का डी कैपिटल है अपने इसमें, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, ये देखो। तो जो पहले 5 मूवी में है, पहले 5 मूवी में जो सेकंड मूवी जो प्रोमेथियस है उसका डायरेक्टर है रिडली स्कॉट। देखा? तो आपको ऐसा पता चलता है कंडीशनल स्टेटमेंट वापरने से कि भाई फॉर विच मूवी दिस पर्टिकुलर मैन इज डायरेक्टर। मीन्स आप कौन सी भी कंडीशन लगा सकते हो, आई एम डीलिंग विद द डायरेक्टर। आपको सर का रेटिंग में चेक करना है, तो आप यू कैन चेक द रेटिंग एज वेल। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक थ्रू रेटिंग, रेटिंग में मैंने कंडीशन लगाई कि 8.6 से ज़्यादा रेटिंग किसकी है, टॉप 3 इसमें, रेटिंग का आर कैपिटल, क्योंकि हमने फिर से वही डेटा सेट रीड किया है ना पहला। ये देखो 8.6, 9.0, 8.8। देखा, टॉप 3। समझा? तो इन दिस वे यू कैन डील विद द कंडीशन, means in particular thing you can apply the condition, according to that condition you can check. ऐसे आप बड़े बड़े कंडीशन भी लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर डेटा सेट हाउ इज इट इज। इज दिस पार्ट क्लियर? भैया थोड़ा ऊपर का दिखाओ ना। 2 मिनट। दिस यस। भैया मास्किंग और कंडीशनल सिलेक्शन सेम है ना? मास्किंग उस दिन बताया था आपको, राइट? हाँ। क्या होता है मास्किंग में? मास्किंग में भी कंडीशन अप्लाई होती है। मगर कैसे? वो भी रिवाइज करवा दो। ठीक है ठीक है, चलेगा। ये हो गया।
If it is done, please let me know. Yes. Okay. तो मास्किंग ना, इधर है मास्किंग। मास्किंग और क्या लिया था उस दिन? कंडीशनल लास्ट टॉपिक था। फिल्टर बताया था, फिल्टर वही कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं इधर। ओके, रिलेटेड भी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, नो वरीज। तो देखो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू मास्किंग एंड दैट थिंग एज वेल, बट उसके पहले एक चीज बताना है आपको मुझे, वो है अप्लाइंग फंक्शन। ओके, हाउ वी कैन अप्लाई फंक्शंस। फंक्शन मीन्स कौन सा फंक्शन? जो अपन फंक्शन बनाते हैं। सपोज अभी मुझे एक फंक्शन बनाना है, उसका नाम है रेटिंग का फंक्शन। रेटिंग का फंक्शन है, और वो फंक्शन के अंदर आई एम पासिंग एक चीज। वो चीज ये है कि जो जब मेरा एक्स बड़ा होगा 8 से, मतलब मेरी जो रेटिंग है 8.0 से ज्यादा होगी, तो वो जो मूवी होगी, तो वो जो मूवी होगी वो होगी क्या? गुड। ओके, और एल्स, अभी सिंपल एग्जांपल है, एल्स वो मूवी होगी क्या? रिटर्न कर दूंगा मैं, रिटर्न आई विल बी डूइंग बैड। तो ये देखो क्या बता रहा हूँ मैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, रेटिंग फंक्शन। अब ये जो रेटिंग फंक्शन है, मैं अपने इसमें कैसा इंक्लूड कर सकता हूँ? हाउ वी कैन अप्लाई फंक्शन। तो सी, मैं फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, इट इज करेक्ट। नाउ सी हाउ आई विल बी अप्लाइंग दिस रेटिंग फंक्शन। आई विल बी पासिंग दिस रेटिंग एंड आई विल बी गोइंग टू अप्लाइंग दैट फंक्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे, जो मेरा मूवीज का ये है, मूवीज डीएफ नाम का डेटा सेट है, जो डेटा फ्रेम है, उसके अंदर एक नया कॉलम बनाएंगे अपन, रेटिंग कैटेगरी। क्या बनाएंगे? रेटिंग कैटेगरी। ओके, और उसको बोलेंगे उसके अंदर जो मूवीज डीएफ है, उसके अंदर है अपने पास क्या? रेटिंग। अपन ये किधर अप्लाई कर रहे हैं? रेटिंग के ऊपर। तो रेटिंग के ऊपर अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो? अपना रेटिंग फंक्शन। अपना रेटिंग फंक्शन जो बनाया है ना, रेटिंग फंक्शन अप्लाई कर दो। when you will be going to apply this rating function, अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, और जब मैं मेरा मूवीज डॉट, सॉरी मूवीज डॉट डी एफ डॉट हेड करूंगा, तो यू कैन सी, और रेटिंग में देखो रेटिंग कैटेगरी आई, हाँ आई। अब देखो इसके अंदर रेटिंग 8.1 है तो मूवी गुड है, 7.0 है तो मूवी बैड है, 7.3 है तो मूवी बैड, 7.2 बैड, 6.2 बैड। So in this way we can apply, means we can create our own function, and with the help of apply, अपन अप्लाई कर सकते हैं वो फंक्शन टू द पर्टिकुलर डेटा सेट। समझा? यस और नो? Yes. सिंपल। Yes. तो ये तो मैंने बताया सिंपल एग्जांपल, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो। और आपको ऐसा करना ही नहीं है, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा नहीं करना, मतलब यू कैन गो विद लैम्बडा फंक्शन ऑल्सो। लैम्बडा से तो और सिंपल हो जाएगा। मीन्स यू कैन यूज डायरेक्टली डॉट अप्लाई के अंदर क्या करना, डायरेक्ट लैम्बडा यूज कर देना। अभी ये देखो लैम्बडा कैसा यूज होता है, ये देखो, डायरेक्टली गो विद लैम्बडा, लैम्बडा, एंड यू कैन सी। अच्छा एरर, क्या एरर? अरे यार ये फालतू एरर आ रहा है, ठीक है, सेम थिंग, जस्ट इम्प्लीमेंट दिस कोड। ओके, ऊपर का नहीं किया तो ऊपर का कर लो पहले, फिर नीचे का कर लो, और मेरे को बोलो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर लूंगा।
Yes, done. गुड, ये भी कर लो। फिर अभी की लास्ट टॉपिक बचा है मास्किंग, वो भी हो गया। मैं जस्ट आई विल गोइंग टू रिवाइज सिंपल, फिर अपना पांडास डन। और वो जो यूट्यूब की वीडियो दी है रेफरेंस, वो भी फॉलो कर लेना, मतलब कोई कोई कंसेप्ट रहेगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट था वो तो सब कवर कर लिया है इधर ऑलमोस्ट। सो सी मीनवाइल में मास्किंग के बारे में आपको बोलता हूँ। मास्किंग इन पांडास मेजरली क्या करता है, आपको अलो करता है क्या करने, यू कैन सिलेक्ट, यू कैन रिप्लेस, हाइड, फिल्टर, कोणते भी वैल्यूज तुम्हारे डाटा फ्रेम में हो या सीरीज में हो, बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मतलब जो कंडीशन प्रोवाइड की है वैसे, जैसा वैष्णवी ने बताया, इट इज सिमिलर टू कंडीशन या इट इज सिमिलर टू द कंडीशन। सो इट मेक यू यूजफुल फॉर हैंडलिंग व्हाट, मिसिंग डाटा, फिल्टर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया और द कंडीशन यू आर प्रोवाइडिंग। ओके, सो आइदर यू कैन गो विथ व्हाट वी कैन से, मास्क का तुम ये भी यूज कर सकते हो, फंक्शन जो प्रोवाइड है मास्क का, मास्क मेथड यूज कर सकते हो फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो एक एग्जांपल देके बताता हूँ सिंपल, यू बी गेटिंग लिटिल बिट आइडिया। डन। Yes. तो ये Yes. देखो, मास्किंग का सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं। तो सी, लेट मी इंपोर्ट numpy एज वेल। numpy का भी थोड़ा उस दिन भी बताया था मैंने मेरे ख्याल से, एक थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएंगे आपको। तो मैं क्रिएट करूंगा डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर आई विल बी क्रिएटिंग अ टू सीरीज, दैट इज माय डेटा फ्रेम। तो देखो 1 2 3 4 5, कॉमा बी 10 20 30 40 50। ओके, ये हो गया डेटा फ्रेम क्रिएट तुम्हारे सामने, df। अब मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल बी डूइंग, प्रिंट करके बताता हूँ एक बार, df। तो ये रहा तुम्हारा डेटा फ्रेम तुम्हारे सामने। सो आई विल बी गोइंग टू अप्लाइंग अ मार्क्स, मार्क्स फंक्शन में अप्लाई करूंगा। और एक सिंपल चीज करूंगा, क्या करूंगा, जो कॉलम ए में वैल्यूज है, जो वैल्यूज ग्रेटर देन 3 है, मतलब जो वैल्यूज है ग्रेटर देन 3 है, उसको मैं रिप्लेस करूंगा एन से। उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, एन से। एन क्या है, उस दिन बहुत अच्छे से बताया था, एवरीथिंग, आई होप एवरीवन नो। अभी देखो जो मेरा ए कॉलम है, उसको मैं करूंगा मास्क, मास्क में मैं पास करूंगा ए, सॉरी ए पड़ा, और वो जो कंडीशन लगाएंगे अपन जो है ग्रेटर देन 3 की, और उसके अंदर मैं लिखूंगा कि उसको रिप्लेस कर दो np डॉट nan, दैट इज योर नॉट अ नंबर। व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस एंड इफ आई चेक माय df, see the values are replaced by nan which are greater than 3। clear to everyone? Yes. yes। तो ये था आज का सेशन, और इसको इतना एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट होने के बाद जस्ट लेट मी नो।
डन। Yes, done. गुड। तो या आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल करेंगे तुम्हारा नेक्स्ट लाइब्रेरी चालू। थोड़ा पांडास थोड़ा बड़ा था, इम्पोर्टेंट में था, इसलिए थोड़ा टाइम लिया, मगर जो भी था सब क्लियर किया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Yes. 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 प्रोवाइडेड वीडियोस जो भी शीट में दिया है, अरे हाँ शीट के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चंस वो भी प्रोवाइड किया है जो लेटेस्ट है। तो अभी तुम फ्लो में हो तो फ्लो में वो कर लो, बाद में करोगे तो फिर से कंफ्यूजन होगा। ठीक है, गो विद द फ्लो एंड डू ऑल द थिंग्स, दैट्स इट। Okay. चलो अभी दिवाली दिवाली चल रही होगी सबके यहाँ, तो जाओ एंजॉय, खाओ पियो मजे करो। अब भैया भैया आज रात का सेशन होने वाला है क्या? आपको चाहिए क्या सेशन तो होगा, नहीं चाहिए तो नहीं, उसमें क्या है, डिपेंड्स ऑन यू। नहीं, चालू करेंगे ना भैया अभी, क्या चालू करेंगे? कल से। हाँ चलेगा, कल से कल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा ना फिर सर के ऊपर से जाएगा। या हम्म। भैया वो जो लिंक्डइन पे अपलोड करना है, हम ये पूरा बूट कैम्प खत्म होने के बाद अपलोड किए, एंड देन इफ वी अपलोड अ सिंगल लिंक तो चलेगा ना? डिपेंड्स ऑन यू, आपको जैसा करना है, नो वरीज, आपको जैसा ठीक है करना है चलो। वैसा करो। ठीक है। ओके। और किसी को कोई डाउट पूछो, अदरवाइज यू कैन लेव द मीट, हैव अ गुड डे, एंजॉय दिवाली। छुट्टी कब तक है? इस वीक तक ही बस। अरे ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे तो अपनी छुट्टी रहेगी, तो तब एंजॉय कर लेना। ठीक है, कल का दिन थोड़ा और पढ़ लो, फिर 3 दिन एंजॉय करना बाद में। ओके, ओके भैया, थैंक यू। बाय। थैंक यू, बाय बाय। चलो बाय बाय। बाय।